नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त वेलकम। तो जेमिति कि आमे गोटे सीरीज स्टार्ट करथिली जोडा कि आमे सब टॉपिक्स रो एमसीक्यूज किछि डिस्कशन करबा। सो से सीरीज रो आज पुनी आ गोटे नुवा वीडियो जोडा कि आमे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देयर बाय हमर अन्य सब माने टॉपिक्स रो मते डिस्कशन आगु आगु रहिबो। तो आज हमर ए जो वीडियो रे आमे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऊपर डिस्कशन करबा। First of all, first anatomy of physiology रो माने डाटी के देखि दपा, then we will start down with the questions. Correct? Anatomy रो माने कोन और physiology रो माने कोन देखो. Anatomy रो माने होची the study of internal body structures. ते हे गेला हमर कोन ना anatomy. Correct? Physiology रो माने कोन? Physiology रो माने हैला the study of the functions of different body systems से हे गेला हमारा फिजियोलॉजी। ठीक अछि जोडा रे कि हमारा डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सब कुछ हमरा इंक्लूडेड रहि जाय छै हैला। आल्सो दे आर इंक्लूडेड विथ आईज एंड इयर्स। हमर जो सेंसरी ऑर्गन्स उडा अछि सेडा मध्ये सेटा रे इंक्लूडेड। ठीक अछि हां जय जय जगन्नाथ भक्ति। ठीक अछि तो स्टार्ट करबा क्लास। तो एठो हमर आरंभ कर देबा। क्वेश्चन नंबर 1, the total number of bones in the adult human skeleton is total number of bones in the human adult skeleton. केतरा नंबर रो बोन होची adult skeleton मानक भितरे? Yes 156, 206, 216, 226. तो obviously adult मानक भितरे हमर 206 होची total number of bones which are found है ना 206. Next question number 2, the longest bone in the human body is the humerus, tibia, femur, fibula. कौन हबो? B. Yes सोनाली प्रतीक्षा। ठीक अछि longest bone जोडा को कि हमर थाई बोन बोली कहै छै। थाई बोन बोली कहै छै। ठीक it is femur। ठीक अछि it is femur। then okay ठीक अछि next, the smallest bone in the human body is कौन हबो? C। ठीक अछि प्रतीक्षा, शिवानी, भारती। smallest bone in the human body is stapes, malleus, incus, patella. कौन हबो? smallest bone भितर हमर सब ear ossicles गुडा आसी जाउछंती। ear ossicles जोडा कि हमर कोन कंसिस्ट होछि? malleus, incus, stapes। malleus, incus और stapes। ए malleus, incus और stapes भितरे हमर ए जो stapes ता सबगुड स्मॉलेस्ट बोली हमें होछि ना शिवानी? यस ए stapes। ठीक अछि आ सहित जो मसल ता जोडी हेगी अछि स्टेपिडियस मसल सेडा होछि हमर सबगुड स्मॉलेस्ट मसल हैला। स्टेपिडियस मसल आसो कनेक्टेड हेगी अछि। The human heart normally has how many chambers? Human heart normally has how many chambers? Human जो माने जोटा कि हमर को क्लास ऑफ vertebrates रे जाउछंदी they come under the class mammalia। करेक्ट। जो मानकर mammary gland प्रेजेंस अछि से मानकर mammals कैटेगरी रो नोचंती आ ह्यूमंस माने मध्ये हमर mammalia क्लास रे जाउछंती। ठीक अछि अच्छा क्लास mammalia भितरे जो हार्ट ता अछि हैला जो हार्ट ता अछि से हार्ट तार किछि किछि प्रॉपर्टी अछि। कोन प्रॉपर्टी? गोटे तो प्रॉपर्टी एया हैला जे इट हैज 4 chambered heart with 2 auricles and 2 ventricles। दीटा ऑरिकल्स और दीटा वेंट्रिकल्स संगे हमर 4 चैम्बर हार्ट इन टोटल हे जाउची। ठीक अछि यस सुचित्रा, अन्वेषा। नेक्स्ट दीटा ऑरिकल और दीटा वेंट्रिकल जो हमर लोकेटेड हे कि अछंती हमर दी प्रकार सर्कुलेशन देखा जाय जो जोडा को पई बोली कहै छै डबल सर्कुलेशन आ गोटे कोन कहै छै द कंप्लीट सर्कुलेशन। कंप्लीट नहीं सॉरी कंप्लीट में क्लोज्ड सर्कुलेशन हैला। क्लोज्ड सर्कुलेशन कोन ए दीटा माने?
डबल सर्कुलेशन रो माने होची द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस. The blood flows through the heart twice. The blood flows through the heart twice. ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ଡବଲ सर्कुलेशन ବୋଲି କୁହାଗଲା. ଗୋଟେ पोर्शन ବା ଗୋଟେ सर्कुलेशन ରେ ଆମର बॉडी इन्वॉल्व थाए ଆଉ ଗୋଟେ सर्कुलेशन रे ଆମର लंग्स इन्वॉल्व थाए हैला. तो एडारे केमिति हमें कहबा बॉडी रो राइट एट्रियम तापर राइट वेंट्रिकल ए जो सर्कुलेशन में देखौची एति की पार्ट ऑफ द बॉडी माने एति की पार्ट ऑफ द हार्ट जाउची ये हे गेला हमर सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक अछि. आउ जो हमर एठू लंग्स रो जाईगिरी तापर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हेगिरी जाउची हैला. ये हे गेला हमर पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक अछि. यस. तो ये हे गेला हमर दी प्रकार सर्कुलेशन जोटा कि हमर सेथिबे बोले डबल सर्कुलेशन बोली कहै जाउची. और क्लोज सर्कुलेशन रो माने होची क्लोज सर्कुलेशन रो माने होची द ब्लड remains within the blood vessels. Within the blood vessels. blood vessels भितर ही blood रही फ्लो करूची. blood vessel बाहर को कोनोसी भी मुहूर्त रे बाहरु नाही हैला बाहरु नाही. सेही टाइप ऑफ सर्कुलेशन टा को हमर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोली कहै जाची जोटा कि हाई ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रे देखा को मिलुची. तो ए जो क्वेश्चन अछि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमर ये आंसर टा हे जो 4. नेक्स्ट, which blood vessel carries the oxygenated blood away from the heart to the rest of the body. heart ru neikiri amaro body को किए हमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करछि. सुपीरियर वेना कावा पल्मोनरी वेन आउटा इंफीरियर वेना कावा कोन हबो जदी देखा पिला आने हम जदी इति कोडी जनरलाइज डायग्राम दे करबा आर ए एल ए आर बी एल बी ये गेला हमर ता फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. दीज आर द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. ए जो चारटा चैम्बर रे हार्ट रहउछि एपड जदी मो बॉडी रखली बॉडी रो मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जेबो का थ्रू रे जेबो वेना कावा थ्रू रे जेबो. तापर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ता राइट वेंट्रिकल को आसीबो करेक्ट. तापर से राइट वेंट्रिकल को जेबो लंग्स को ओडा जीवो कि सेही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जीवो बट इट विल बी कैरिड आउट बाय पल्मोनरी आर्टरी. ठीक. तापर लंग्स रो जीवो हमर लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड हेगी. तो ऑक्सीजनेटेड हला पर इट विल बी कैरिड आउट बाय पल्मोनरी वेन. तापर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जीवो तापर पूरा होल बॉडी को प्रोवाइड करबो से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी आउट जोटा कि हमर लार्जेस्ट ब्लड वेसल बोली मत कहू. लार्जेस्ट ब्लड वेसल बोली मत कहू. ठीक ठीक. तो ये हमर आंसर हे जिवो सी आउट. डन. यस भारती शिवानी सुचित्रा. ठीक अछि. नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6. which blood vessel returns the deoxygenated blood from the body to the heart. deoxygenated blood ता बॉडी रू हार्ट पाखु को के नेकी जाउची एडी बा करले बॉडी रू हार्ट पाखु को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नेकी जाउची के वेना कावा करेक्ट. तो एडी कोन अछि वेना कावा वेन्स तो अछि. which blood vessel return deoxygenated blood from the body to the heart. बॉडी टू द हार्ट सेरा हमर वेना कावा नउची. ठीक अछि. वेना कावा नउची जोटा कि हमर लार्जेस्ट वेन. तो एडा हमर वेन्स रे ही काम करा जीवो ना. वेन्स रे ही काम करा जीवो. जदि हमें वेना कावा कथा देखिबा ताले हमर तीनटा ब्लड वेसल थ्री टाइप्स ऑफ वेन्स कंसिस्ट हेकरी बा मिसिगिरी कंप्रोमाइज हेकरी हमर वेना कावा होचंती. ठीक अछि. कोन सेडा गोटे होची सुपीरियर वेना कावा गोटे होची इंफीरियर वेना कावा आ गोटे होची कोरोनरी साइनस. ठीक अछि. अच्छा. सुपीरियर वेना कावा कोन करची carries deoxygenated blood from upper part of the body. हार्ट ऊपर पोर्शन जति भी सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहउची से सब कैरी करिके हमर सुपीरियर वेना कावा निके आछी. इंफीरियर वेना कावा कोन करची ना कैरीज
deoxygenated blood from lower part of the body. Body ro lower part ro amara deoxygenated blood carry kari neki jauchi. Coronary sinus kon koruchi, na it carries deoxygenated blood from the heart itself. Heart ru hi deoxygenated blood ta carry kari heart part ko neki jauchi. ठीक अछि. तीनटा जगह मिसकी बेना का होची, and since it is the largest vein, so according to the option amara vein is going correct answer. Then next, which blood group is known as the universal donor? Universal donor. कौन? A positive, A O negative, AB positive, B negative. कौन हम? Question number 7. Which blood group is known as the universal donor? Universal donor माने ये कहाँ को हेले भी blood दे परिबो. कहाँ को हेले जदि blood दे परिबो ता माने ता body रे कौन से प्रकार antigen रहिबा कथा नहीं. Correct? कौन से प्रकार antigen रहिबा कथा नहीं. तो से प्रकार antigen जदि ता body रे नहीं ताहले से कहाँ को भी blood दे परिबो. ठीक अछि. O negative will be the correct answer. Yes, Pratisha. O negative तो जितार देखिबा हमें RBC ऊपर RBC ऊपर किछि नहीं तार हैला किछि नहीं कोन ना तो O एंटीजन अछि ना RH एंटीजन अछि आमे जदी O पॉजिटिव कथा मते देखिबा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रे कोन रोजि जे किछि नहीं जदी कोन से एंटीजन नहीं किंतु RH एंटीजन तो रोजि ना जोडा कि ताको पॉजिटिव बने दोछि तो ये RH एंटीजन रो एंट्री मध्य इनटू सम अदर इंडिविजुअल गोटे नेगेटिव इंडिविजुअल को से देई परिबनी ब्लड हैला किंतु O नेगेटिव वाला ब्लड ना तो O बोली कहले कोन से एंटीजन नहीं नेगेटिव बोली कहले हमरा RH एंटीजन मने रहता ठीक अछि तो से कहा को हेले ब्लड देई परिबा नेक्स्ट which blood group is known as the universal recipient universal recipient ता माने ता पाखे सब एंटीजन गुडा को थिबो सब एंटीजन थिबो से A टू भी नहीं परिबो B टू भी नहीं परिबो पॉजिटिव वाला टू भी नहीं परिबो नेगेटिव वाला टू भी नहीं परिबो ता बॉडी रे सब एंटीजन थिबो बोली कहली जे कोन से एंटीजन रो मध्ये से आनी गिरी से ताको रिसीव करि परिबो आ ताको डिटेक्ट करि परिबो किछ प्रॉब्लम होबनी ठीक अछि तो AB पॉजिटिव RBC ऊपर AB अछि B भी अछि RH भी अछि AB पॉजिटिव ठीक ठीक सुदामिनी यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन करो कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन द ह्यूमन रिब केज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स human rib cage consists of how many pair of ribs yes it is 12 pair of ribs है ना 12 pair of ribs से भितरु 7 pairs होचनी हमर true ribs है ना 7 pairs हले कोन true ribs 3 pair हला false ribs आउ जो दीटा पेयर रहिबे सेडा को हमरो फ्लोटिंग रिब्स बोली कहै फ्लोटिंग रिब्स बोली कहै छै ठीक 12 रिब्स यस सुचिस्मिता देन तो ये हेगला हमरो रिब केज कथा नेक्स्ट द ह्यूमन सर्वाइकल वर्टेब्रे इन द ह्यूमन स्पाइन इज the number of the cervical vertebrae in the human spine is कोन जोडा कि हमरो नेक रीजन रो वर्टेब्रल कॉलम रीजन को से पूरा एक्सटेंड होची से रीजन का कोन सेडा होची हमर 17 7 there are 7 number of cervical vertebrates 7 number of cervical vertebrates yes Pratisha next the largest organ of the human body is the liver skin lung brain largest organ liver ता hi जाउची largest gland skin being the largest organ से हमर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी प्रोवाइड करूची इनेट इम्यूनिटी स्ट्रक्चर ता मध्ये गोटे कहि परिबा जोटा कि हमर बॉडी को कोन से भी एक्सटर्नल इंजुरी रो एक्सटर्नल अटैक रो या फिर एक्सटर्नल पैथोजन रो प्रोटेक्ट करि के भी रखि थाउची आंसर हियर विल बी बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज alveolus न्यूरॉन नेफ्रॉन sarcomere किडनी रो फंक्शनल यूनिट ता कोन सुचिस्मिता यस बी सुचित्रा बी kidney रो functional unit the functional of unit of kidney is nephron proximity kidney each kidney
consists of about 1 million nephron. 1 million nephron अच्छी गोटे गोटे किडनी 1 million nephron अच्छी गोटे गोटे किडनी रे ठीक sarcomere टा कहार यूनिट मसल फाइबर यूनिट न्यूरॉन टा कहार यूनिट ब्रेन रो यूनिट alveolus टा कहार यूनिट लंग्स रो यूनिट ठीक अछि से किडनी रो यूनिट पचाला आंसर विल बी नेफ्रॉन हैला आंसर विल बी नेफ्रॉन सुबलक्ष्मी सर्विकल 8 थाए सर्वाइकल बा 7 थाए C1 रो C7 नेक रीजन रो वर्टेब्रल कॉलम जाय ह्यूमन स्पाइन रे नेक्स्ट क्वेश्चन the basic structure and functional unit of the nervous system देखो आसी वाला से क्वेश्चन है ना आसी वाला से क्वेश्चन कौन ना the basic structure and functional unit of the nervous system is the neuron है ना न्यूरॉन जोटा कि हमर गुडाई प्रकार न्यूरॉन्स अछि ठीक अछि गुडाई प्रकार न्यूरॉन्स अछि कोन से न्यूरॉन्स उडा को देखिलो गोटे होछि बाइपोलर यूनिपोलर pseudo unipolar और मल्टीपोलर ठीक अछि न्यूरॉन त जति के अछि ता संगे हमर न्यूरोग्लियल सेल्स अछि से न्यूरोग्लियल सेल्स उडा बहुत ही इंपोर्टेंट हला कोन देखि दियो हमर ये शॉर्ट रे लिखि दउछि सब उडा न्यूरोग्लियल सेल्स जोडा कि हमर न्यूरॉन्स रो सपोर्टिंग सेल्स उडा न्यूरॉन्स रो सपोर्टिंग सेल्स उडा सेडा हमर सीएनएस रे माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रे मिसे कि हमर चारि प्रकार न्यूरोग्लियल सेल्स अछि गोटे होची एस्ट्रोसाइट्स आ गोटे होची एपेंडाइमल सेल्स आ गोटे होची ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आ गोटे हला माइक्रोग्लिया ठीक अछि ये हला हम सीएनएस रो सब गुडा को न्यूरोग्लियल सेल्स पीएनएस रे जो न्यूरोग्लियल सेल्स अछि पीएनएस रे जो न्यूरोग्लियल सेल्स अछि से हला गोटे हला स्क्वान सेल आ गोटे हला सैटेलाइट सेल स्क्वान सेल आ गोटे हला सैटेलाइट सेल ठीक अछि न्यूरॉन यस एडा बहुत इंपोर्टेंट आर फंक्शंस थोड़ा का मते टिके सर्च करिके देखि दबो हैला सर्च करिके देखि दबो यस दीस आर नॉन एक्साइटेटरी सेल्स ठीक अछि हो हमें फर्दर क्लासेस रे जते बेले हमें पूरा चैप्टर वाइज डिस्कशन करबा सेते बेले ऑब्वियसली मैं एडा को सब कवर करे देबी हैला ठीक अछि आज ओवरऑल हम सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऊपर क्वेश्चन ऊपर करूचे तो सेति में बोली एते एम्फेसिस करबानी आगु बुझबा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली हैज हाउ मेनी पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स हाउ मेनी पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स चलो आंसर करो yes b b yes 12 पेयर अछि क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर कोन स्पाइनल नर्व 12 पेयर रे क्रेनियल नर्व अछि और 31 पेयर रे हमर स्पाइनल नर्व अछि डन ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन which cranial nerve is primarily responsible for the sense of the smell smell रो sensation ପାଇଁ बोली को nerve ना हमर important को cranial nerve ता हमर important optic olfactory facial ना vagus yes 12 ता कोन हबो smell ପାଇଁ हला olfactory nerve कोडी अछि ना cranial nerve 1 cranial nerve 1 हला yes अन्वेषा ठीक अछि b next which cranial nerve is the largest and supplies sensation to the face जो facial nerve ପାଇଁ बोली हम थोड़ा कोडा जो कोन को जाउची facial nerve ପାଇଁ बोली जो हमर nerve ता अछि सी हला cranial nerve 5 cranial nerve 5 कोन हबो सेला को nerve ता कहलो गुड मॉर्निंग धीरज हां कोन हबो एडा एडा हबो ट्राइजेमिनल नर्व एडा सब लार्जेस्ट नर्व आ ता संगे ये हमर फेस रो सेंसेशन ପାଇଁ बोली एडा रिस्पांसिबल cranial nerve number 5 रे एडा रोच नेक्स्ट
Which part of the brain is primarily responsible for the balance and coordination? Balance and coordination ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ brain ର କୋ part ଟା responsible? Question number 17 everyone. Brain ର ଆମର जो तीनटा part रहुची forebrain, midbrain और hindbrain, से भितरु hindbrain रो जो cerebellum portion टा अछि हैला लक्ष्मी cerebellum भी yes cerebellum portion टा अछि. The cerebellum portion टा is responsible for the posture and balance of our body. Posture and balance of our body जोटा द्वारा कि हम बॉडी रो गोटे स्ट्रेंथ पोस्चर गोटे मेंटेन रोच. ठीक. नेक्स्ट, which part of the brain regulates the body temperature, hunger and thirst? Body temperature, hunger and thirst. Cerebellum, hypothalamus, pons, occipital lobe. हाँ सुप्रिया अर्पिता कौन होगा? Which part of the brain regulates the temperature, hunger and thirst? Temperature, hunger and thirst. It is yes B everyone. Hypothalamus है ना. Hypothalamus ये हमारा टेम्परेचर हंगर थर्स्ट को मेंटेन करबा संगे से हम बॉडी रे होमियोस्टेसिस मेंटेन करूची. होमियोस्टेसिस मेंटेन करूची. होमियोस्टेसिस माने इंटरनल कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जोटा कि कितने डिग्री? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस. Next answer question number 19. The outermost layer of the skin is called dermis, epidermis, hypodermis, subcutaneous layer. The outermost layer of the skin. कौन होगा? Yes, B. Shishri. Epidermis. है ना. एपिडर्मिस होची सब आउटर मोस्ट लेयर टा. एपिडर्मिस माने एपिथेलियल लेयर टा, आउटर लेयर टा, ऊपर लेयर टा हमर सब बड़े स्किन. स्किन द स्टडी को हमर डर्मेटोलॉजी बोली कहा जा. डर्मेटोलॉजी बोली कहा जा. Next question is, sweat glands and hair follicles are primarily located in which layer of the skin? Sweat glands and hair follicles are primarily located in which layer of the skin? Epidermis, dermis, stratum corneum, cuticle. को layer रे skin रा hair follicles और sweat glands का present थांती. It is the dermis. Yes, dermis. Our AD not only our era कौन होते थोड़ा करे होंगे. हाँ, not only our AD but also our complex structures like sweat glands, sebaceous glands. Sebaceous को जोड़ा कि हमारे oil glands बोले मतलब को आ जाऊँगी. हैला, nerve endings, hair follicles and blood vessels. ये सब हमारा connected हो गए थाई areas है ना. Yes, blood vessel is also correct. तो ये वाला सब हमारा connected हो गए थाई हमारा dermal layer. Next question is question number 21. The normal pH of the human arterial blood is approximately. Human arterial blood कितने रोची human arterial blood pH slightly alkaline रोची है ना. Slightly alkaline जोड़ा कि हमारा 7.4 बोले को है. 7.4 रेंज रे किया आसुची. ये ऑप्शन दा आसुची. ऑप्शन नंबर C here will be the correct answer. 7.35 रो 7.45. ठीक है सुचित्रा. Done. ठीक. चलो next question जब which blood cells are primarily responsible for the blood clotting? Blood clotting ପାଇଁ बोली किए responsible? Erythrocyte, leukocyte, platelet और thrombocytes and lymphocytes. किए blood clotting ପାଇଁ बोली responsible? Yes, Pratiksha. C. Okay, C. ठीक है जी. Platelet होची हमारा thrombocytes आर formation को. Formation of platelet को हमारा को आ जाऊँगी thrombocytosis है ना. किमेरी form होची? It is form from the fragments of
मेगाकैरियोसाइट्स मेगाकैरियोसाइट्स रो फ्रैगमेंट्स रो एटा फॉर्म होची जोडा करो कि मेजर फंक्शन हला हमर कोन मेजर फंक्शन हला ब्लड रो क्लॉटिंग करेगा हला जदी हमर प्लेटलेट काउंट इज इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट जदी बढ़ी जाए बॉडी रे ताहाले से कंडीशन ता कोन कुआ जिवो से कंडीशन ता अरे थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं थ्रोम्बोपोएसिस सॉरी सॉरी फॉर्मेशन ता होची थ्रोम्बोपोएसिस ठीक अछि प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हेले सेड आउट हो जाउची थ्रोम्बोसाइटोसिस सब बेले एरे कंफ्यूजन हो जाए ना थ्रोम्बोसाइटोसिस ठीक अछि प्लेटलेट काउंट बढ़िला थ्रोम्बोसाइटोसिस एबे प्लेटलेट काउंट जते बेले कमुछ प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड से केस रे कोन कुआ जाउची सेटा कुआ जाउची थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हाँ थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज यस यस सर सब बड़े साइटोसिस और पेनिया और पोएसिस रे ठीक कंफ्यूजन रहउची पेनिया ना मन रहि जाउची कमिले पेनिया होची बोली हैला आ साइटोसिस और पोएसिस भितरे ही कंफ्यूजन हो जाउची ठीक 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 हाउ चलो तो प्लेटलेट कथा हे गला सब डन नेक्स्ट क्वेश्चन आसा which blood cells are primarily responsible for fighting infections red blood cell white blood cell platelet या plasma cells only thrombocytopenia done done ठीक अछि शुक्रिया फाइट इन्फेक्शन फाइट करिया टाइम बोली को सेल गुडा रिस्पांसिबल हम बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस to fight against the infections our body रे हमर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट अछि सुबलक्ष्मी यस WBCs हैला WBCs जोटा को की कोन कहआ जाउची ल्यूकोसाइट्स बोली कहआ जाउची ल्यूकोसाइट्स बोली कहआ जाउची तार फॉर्मेशन ता कोन हबो एबे आ भूल करबानी एरा हबो ल्यूकोपोएसिस WBC काउंट बढ़िले WBC रो काउंट बढ़िले सेटा को कहआ जाउची ल्यूकोसाइटोसिस या फिर सीवियर मोर सीवियर फॉर्म रे ल्यूकेमिया बोली मथन कहआ जाउची WBC काउंट जते बेले कमिबो डिक्रीज होबो WBC काउंट डिक्रीज हेले से कंडीशन रो कहआ जाउची कोन ल्यूकोसाइटोपेनिया या ल्यूकोपेनिया बोली मथे कहआ जाउची ठीक ठीक व्हाइट ब्लड सेल्स यस अच्छा तो एबे हमें व्हाइट ब्लड सेल्स भीतर कोन कोन रही छि देखिलो टिके जस्ट देखि दबा व्हाइट ब्लड सेल्स हमर दी प्रकार अछनी गोटे हेले ए ग्रैन्युलोसाइट्स आ गोटे हेला ग्रैन्युलोसाइट्स हैला ग्रैन्युलोसाइट्स भीतर के अछनी बेसोफिल्स 0.5 ରୁ 1% प्रेजेंट तापरे आसेला इओसिनोफिल्स 2 to 3% represent आउ तापरे आसिले न्यूट्रोफिल्स 65 to 70% रे हमर प्रेजेंट 70% रे हमर प्रेजेंट थांती देन अच्छा ए ग्रैन्युलोसाइट्स भीतर दीटा अछंती गोटे हला मोनोसाइट आ गोटे हला लिम्फोसाइट हमर दी प्रकार बी सेल आ गोटे हला बी सेल गोटे प्रकार आ टी सेल हला तो ए जो हमर WBC जोड़ाबो जेति भी सब प्रकार WBCs माने अछंती these all are involved in our immunity हम बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करिबारे माने समस्त इन्वॉल्व था ठीक इम्यूनिटी प्रोवाइड करिबारे इन्वॉल्व था नेक्स्ट क्वेश्चन आसा क्वेश्चन नंबर 24 which blood cell are primarily responsible for carrying oxygen के कैरी करची जा पाखरे ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट अछि ऑक्सीजन के कैरी करिवो which has oxygen carrying pigment within themselves अब से ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ता कोन इट इज हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ता ठीक अछि आ कोडी अछि हीमोग्लोबिन आरबीसी रे आरबीसी ता कोन इट इज अ बाइकॉन्केव एंड राउंड शेप्ड सेल आ एडा रे हमरो
एन्यूक्लिएटेड एन्यूक्लिएटेड रो माने हला विदाउट न्यूक्लियस न्यूक्लियस नाही ही समान को पाखरे नाही ही समान को पाखरे ठीक अछि व्हाई because they require space to carry oxygen हला हीमोग्लोबिन रो जदी स्ट्रक्चर ता देखिबा हमें ए टाइप रो हमर टेट्रामर ऑफ आयरन मॉलिक्यूल्स थांती हला आ प्रतिटी आयरन मॉलिक्यूल संगे रे हमर गोटे गोटे ग्लोबिन चेन अटैच हेगी थाए ग्लोबिन चेन अटैच हेगी थाए अल्फा अल्फा ये हला बीटा बीटा ठीक अछि सेति पय बोली जते बेला हमर आरबीसी रो डेफिशिएंसी हो जाउची आयरन मॉलिक्यूल्स को खाइबा पय बोली कहआ जाउची एडी हला हमर ऑप्शन नंबर सी आरबीसी आरबीसी रो फॉर्मेशन को कोन कहआ जाउची एरिथ्रोपोएसिस बोली कहआ जाउची आरबीसी काउंट बढ़िला कोन कहआ छी को आ आरबीसी काउंट कमिली कोन कहआ छी आरबीसी काउंट बढ़िले कोन कहआ जाउची आरबीसी काउंट कमिले कोन कहआ जाउची आरबीसी काउंट बढ़िले से कंडीशन दा कहआ जाउची पॉलीसिथेमिया आ आरबीसी काउंट कमिले से कंडीशन दा कहआ गला एनीमिया करेक्ट एनीमिया चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी 29 25 which hormone produced by the pancreas lowers the blood glucose level को कमे दोची को हार्मोन दा पैनक्रियास रो रिलीज होची आ ब्लड शुगर लेवल को बा ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमर कमे दोची केसी हार्मोन यस पैनक्रियास होची हमर गोटे कोन मिक्सोक्राइन ग्लैंड का बा मिक्स्ड ग्लैंड का ठीक अछि आर दीटा जगह फंक्शन अछि हेटेरोक्राइन फंक्शन माने एक्सोक्राइन फंक्शन भी अछि और एंडोक्राइन फंक्शन भी अछि एंडोक्राइन फंक्शन हिसाब रे जदी देखिबा ताले ता पकरे अछि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सेल गोटे हला अल्फा सेल और गोटे हला बीटा सेल अल्फा सेल होची ग्लूकागॉन रिलीज करची और बीटा सेल हमर इंसुलिन रिलीज करची ग्लूकागॉन कोन करची इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल सेति पय बोली ग्लूकागॉन को हमर हाइपरग्लाइसेमिक बोली कहै जाउची ठीक और इंसुलिन कोन करची लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल हला अब एरा हमर कोन हाइपोग्लाइसेमिक को जाउची ठीक अछि तो कि हमर हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन हमर हाइपोग्लाइसेमिक ठीक अछि हां हां डेल्टा सेल्स भी अछि सोमाटोस्टैटिन रिलीज करछंती पॉलीपेप्टाइड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करछंती मेजरली हमें ग्लाइसेमिक पोर्शन रे कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा जदी ग्लूकागॉन और इंसुलिन हमर एंटागोनिस्टिक इन नेचर को सती टाइम बोली अल्फा और डेल्टा अल्फा और बीटा पाखे लिखली आउ जो एक्सोक्राइन फंक्शन हिसाब रे से माने जो जति के भी सब एंजाइम रे सिक्रेशन करछंती सेडा जायकि हमर डिओडेनम रे ओपन होची हला डिओडेनम रे ओपन होची जो डक्ट द्वारा जायकि डिओडेनम रे ओपन होची सेडा को जाची द डक्ट ऑफ विल्सन बोली एटा को कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 which hormone produced by the pancreas raises the blood glucose level देखा आती वाला क्वेश्चन ना कि हमर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ौची ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम होतला इंसुलिन पैनक्रियास द्वारा रिलीज होतला आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रो बीटा सेल्स रो रिलीज होतला बढ़ेबा हमर ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ऑफ द बीटा सेल्स माने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रो अल्फा सेल्स रो रिलीज होची ग्लूकागॉन नेक्स्ट which endocrine gland is often referred to as the master gland बोली कोटा को ग्लैंड को हम रेफर करा जाउची थायराइड ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड ना पैनक्रियास जनरली हम मास्टर ग्लैंड को हमर पिट्यूटरी ग्लैंड बोली कंसीडर करा जाउची हला इट इज अ बाइलोब ग्लैंड हाइपोथैलेमस अछि हाइपोथैलेमस को इन विद स्टॉक और इंफंटिबुलम या हमर गोटे बाइलोब स्ट्रक्चर ता एंड अटैच हेगरी थाए हला आगो पोर्शन ता सेडा हमर को जाउची कोन anterior lobe of pituitary or adeno hypophysis एपटटा हला कोन posterior pituitary और एडा कहा गला
हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस रो केवल दीटा हार्मोन ही रिलीज होची करेक्ट दीटा हार्मोन कौन से दीटा हार्मोन गोटे हला एडीएच और वेसोप्रेसिन आ गोटे हला ऑक्सीटोसिन आ गोटे हला ऑक्सीटोसिन ठीक अछि तो एडी पिट्यूटरी ग्लैंड आ बाकी जति के भी सब हार्मोन जेमति कि ग्रोथ हार्मोन हेगला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेगला कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हेगला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हेगला प्रोलैक्टिन हेगला से सब हमर एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होछ ठीक अछि तरा हां मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होछि हाइपोथैलेमस सोनाली यस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हला हाइपोथैलेमस ठीक चलो नेक्स्ट thyroxine the hormone that regulates the body's metabolic rate is produced by the pituitary gland thyroid gland adrenal gland pancreas कोडू थायरॉक्सिन हमर कोन करछि बॉडी रो मेटाबॉलिक बीएमआर माने बीएमआर को मेंटेन करछि बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करछि बॉडी रो टेंपरेचर को रेगुलेट करके रखछि तो सेटा हमर कोडू रिलीज होछि थायरॉक्सिन ना हमर T4 हार्मोन ना जोडा कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोली कहउछि टेट्रा आयोडोथायरोनिन एडा रिलीज होछि हमर थायराइड ग्लैंड रिलीज होछि हमर थायराइड ठीक अछि देन नेक्स्ट how many lobe does the right lung normally have compared to the left lung right lung रे केतरा लोब अछि left lung अपेक्षा हमर जदि देखिबा lungs हमर दीटा lungs अछि हला दीटा lungs अछि से जो दीटा lungs रे ट्रैकिया सीरियम बाइफर्केट होछि ये हला राइट साइड ऑफ द lungs ये हला लेफ्ट साइड ऑफ द lungs हला राइट साइड ऑफ द lungs हमर ए टाइप रो बाइफर्केशन हिच और लेफ्ट साइड रे ए टाइप ठीक अछि त राइट साइड रे हमर तीनटा लोब अछि ये हला सुपीरियर लोब ये हला मिडिल लोब ये हला इंफीरियर लोब ठीक अछि आ एपटे लेफ्ट साइड रे सुपीरियर लोब आ इंफीरियर लोब ये हला राइट साइड ये हला लेफ्ट साइड ठीक अछि आ ए माने जो फिशर्स द्वारा बाइफर्केट होचंती एडा उपा जाउची कोन हॉराइजॉन्टल फिशर सुपीरियर लोब आ मिडिल लोब को बाइफर्केट करला आ एडा हला जो ऑब्लिक फिशर ये हमर मिडिल लोब आ इंफीरियर लोब को बाइफर्केट ठीक अछि आ एपटे सुपीरियर लोब आ इंफीरियर लोब को बाइफर्केट करिवार जो फिशर था ये हला हमर हॉराइजॉन्टल लोब तो राइट ता 3 लेफ्ट ता 2 राइट ता 3 लेफ्ट ता 2 ठीक नेक्स्ट the exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs occurs primarily at the level of oxygen and carbon dioxide exchange ra kodi hoch oxygen and carbon dioxide exchange ra kodi hoch हमर सेना alveoli रे होच ठीक अछि alveoli रे होच से exchange रा और जो exchange रा होच ना ये हला हमर alveoli ये हला हमर blood vessels करेक्ट alveoli रो ये हला हमर surface membrane squamous epithelium lined by squamous epithelium ये हला हमर blood vessel रो squamous epithelium जोडा को हमर endothelium बोली कहै ता भितरे जो सब्सटेंस रही छै बा स्पेस रही छै ताको कहला बेसमेंट सब्सटेंस बा बेसमेंट मेम्ब्रेन जदि हमें देखिबा गैसेस एक्सचेंज हमें इनहेल करला पर ऑक्सीजन आसु छै एठी के तापर ये एक्सचेंज हो छै ब्लड वेसल को जाउ तार बदल रे कार्बन डाइऑक्साइड हमर alveoli को जाउ कि तापर हम कोई एक्सपायर आउट कर दउ छै हला एक्सपायर आउट कर दउ छै एडर कोन हो छै तीनटा लेयर देखि 1 2 3 तीनटा लेयर देखि ऑक्सीजन का हमर डिफ्यूजन हेगी गैसेस एक्सचेंज हो छै हला कोन हो छै एठी ना सिंपल को लेयर देखि जाउ छै पास करछि सिंपल एपिथेलियम ऑफ alveoli basement membrane ଆଉ एडा हला कोन ना एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल हला तो 1 2 3 ए तीनटा मिसी के हमर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो छै respiratory membrane होची ठीक अछि and it is less than 1 mm ठीक अछि गुड मॉर्निंग टुकुनी ठीक अछि जत्ते रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमर चौड़ा हबो जत्ते सरफेस एरिया बड़ हबो जत्ते हमर मॉइस्ट रहिबा और जत्ते पतला हबो सरफेस एरिया तत्ते बेटर हमर गैसेस रो डिफ्यूजन हे पाए हैला चलो नेक्स्ट बाय में which muscle separates the thoracic cavity from the abdominal cavity and plays a key role in the respiration को मसल डा हमर abdominal cavity को thoracic cavity रो सेपरेट करूची आउ रेस्पिरेशन रे मदे रोल प्ले करूची से जो मसल डा हला डायफ्राम
जो मसल टा कि हमर फ्रेनिक मसल्स रे मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल्स रे मेड अब ये जो फ्रेनिक मसल टा नहीं ये जो फ्रेनिक मसल इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स मैमल्स मान का कैरेक्टरिस्टिक मसल टा मैमल्स मान का पाखरे ही केवल देखा ठीक डायफ्राम नेक्स्ट बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गन बाइल प्रोडक्शन को ऑर्गन करूछ बाइल प्रोडक्शन को ऑर्गन करूछ बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर और बाइल हमर कोन पे दरकार बाइल दरकार हमर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट रो एमल्सिफिकेशन टाइम बोली बाइल दरकार हैला तो ये ऑप्शन नंबर सी हे जबो गॉल ब्लैडर रे स्टोर होची से बानी स्टोर होची सेटा ए कोडा पूछो ओ प्रीवियस टाइम कोटलो कि अच्छा ठीक अछि एरा हे जबो सी लिवर ठीक अछि ओके नेक्स्ट आसो bile is stored and concentrated in the storage कोडी होची bile liver gallbladder duodenum pancreas pancreas तो हेला हमर मेसोक्राइन ग्लैंड एडा तो हमर हार्मोन सिक्रेशन होची ए तो bile से किछ लेना देना नहीं duodenum रे आसे कि bile पडुची हैला सो दैट एमल्सिफिकेशन हे परिबो फैट्स liver हमर bile secretion करला bile स्टोरेज और तार कंसंट्रेशन gallbladder bile स्टोरेज और तार कंसंट्रेशन gallbladder रे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 which enzyme present in the saliva begins the digestion of the starch saliva रे present अछि को एंजाइम दा जोटा कि हमर स्टार्च डाइजेशन को इनिशिएट करू स्टार्च डाइजेशन को स्टार्ट करू हैला कोन सहीना सेडा होछि salivary amylase बा टाइलिन एंजाइम salivary amylase और टाइलिन एंजाइम एटा हमर माउथ रे प्रेजेंट थाई ठीक माउथ रे प्रेजेंट थाई आउ एठी 30% of carbohydrate 30% of carbohydrate is digested here carbohydrate 30% ର ଏଠି digestion ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି after the 30% digestion of the carbohydrate ଏଇଟା ଆମର ତାପରେ esophagus को enter କରୁଛି esophagus को enter କରୁଛି esophagus रे कोनसी प्रकार digestion हो नाही काहे ना कोनसी प्रकार एंजाइम भी नाही सेठी में peristaltic movement करी करी peristaltic movement करी करी ये कोन करूची ना हमर तळबु खसिगिरी आसुची हैला तो एडी जो हमर जो ये होची एडा को हमर बोलस बोली कहा जाती जो फुट्टा डाइजेशन हे गला पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हे गला पर ताको कोन कहा जाउची बोलस बोली कहा जाउची ठीक salivary amylase टाइप नेक्स्ट which enzyme secreted by the stomach digest the proteins protein रो डाइजेशन के करछु स्टोमक आ ଗୋଟେ क्वेश्चन एडी कर दउछु मध्ये जे which enzyme secreted by the small intestine digests protein कौन होची बी यस पेप्सिन एडा पेप्सिन करेक्ट आंसर ठीक अछि स्टोमक रो डाइजेशन हेगी हमर पेप्सिन हमर कन्वर्ट करछ ठीक अछि एडी हमर एंजाइम हमर जो स्मॉल इंटेस्टाइन रे प्रोटीन डाइजेशन ପାଇଁ बोली एंजाइम ता कोन सेटा स्मॉल इंटेस्टाइन रे मते प्रोटीन डाइजेशन करिया ପାଇଁ बोली किछ एंजाइम रे रिलीज होची हला कोन सेटा स्मॉल इंटेस्टाइन हमें कोई परिबा जोडे कि स्मॉल इंटेस्टाइन रा सी बोलची या फिर पैनक्रियाटिक स्मॉल इंटेस्टाइन रे होची पैनक्रियास रो रिलीज होची कोन सेटा सेटा होची ट्रिप्सिन ठीक अछि कोन करछि से ना ट्रिप्सिनोजेन फॉर्म रे रिलीज होची स्मॉल इंटेस्टाइन को आसिला पर से हमर एंटेरोकाइनेज एंजाइम रो हेल्प रे ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट होची तापरे प्रोटीन रो डाइजेशन करछि protein digestion करछि next which part of the small intestine is the primary site of nutrient absorption duodenum jejunum cecum rectum कौन हबो yes trypsin
हम्म ए ए बी सोनाली बी लक्ष्मी अर्पिता ठीक আছে এটা যাব বি জেজুনাম কাইঙ্গি না এটা হচ্ছে হাইলি কয়েল and longest part of the small intestine. Longest part of the small intestine. ठीक ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆମର brush border epithelium present ଅଛି. brush border epithelium present ଅଛି. ठीक ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା absorptive site ବନେଇଛି. Next, which is the longest part of the small intestine? Longest part पुणी आउथरे से क्वेश्चन आसीगला ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ क्वेश्चन କଣ हबो longest part of the small intestine will be jejunum. जेजुनम हैला हां जेजुनम रे वाटर आउ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन हुए हमरो डिओडेनम रे डाइजेशन प्लस अब्जॉर्प्शन दीटा जक होची हैला दीटा जक होची जेजुनम सिंस इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सेरी हमर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हेबा जणा नेक्स्ट द बोन दैट फॉर्म्स द नी कैप इज कॉल्ड अरे अरे सॉरी सॉरी मैं एटा जेजुनम को बोली जे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हमर इलियम हबो ना ये आंसर करछो बी ना 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 सॉरी 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 मु सेटा प्रीवियस क्वेश्चन को रिलेट करके करि देली हला लॉन्गेस्ट पार्ट हिजबो इलियम ठीक अछि जोटा कि हमर सिस्टम संगे कनेक्ट करछि जेजुनम रे अधिका मात्रा रे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अछि बोली सेरी हमर अधिका अब्जॉर्प्शन देखा जाउछि हैला अधिक अब्जॉर्प्शन देखा जाउछि एटी करेक्शन कर दियो मुसे प्रीवियस क्वेश्चन रो कॉन्टेक्स्ट रे एटा पढ़ चली नेक्स्ट द बोन दैट फॉर्म्स द नी कैप इज कॉल्ड एज द patella ठीक अछि patella नेक्स्ट the shoulder joint is an example of which type of joint shoulder joint is an example of which type of joint yes ilium शोल्डर जॉइंट रे हमर गोटे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देखा जाउची ना वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देखा जाउची तो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देखा जाउतबा हमर जो शोल्डर जॉइंट ता पाखरे हमर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देन यस नेक्स्ट द एल्बो जॉइंट ता जोटा कि हमर को प्रकार जॉइंट ता देखिलो है ना एल्बो जॉइंट रे हमर कोन होची आ फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन को सी अलाउ करची कोन अलाउ करची फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन तो एरा आपको पाखरे को प्रकार जॉइंट अछि एरा होची हिंज जॉइंट हैला ये हैला हिंज जॉइंट देन नेक्स्ट 41 the fibrous structure that connects the muscle and the bone is called the fibrous structure bone to muscles fine tendons एरा गोटे को टाइप रो टिश्यू डा इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू रो को कैटेगरी रे आसुची dense regular connective tissue dense regular connective tissue yes तो ये हेगला हमर कोन tendons bone to muscle to bone अछि त हां ठीक अछि the fibrous structure that connect the bone to bone at a joint bone to bone connection ता हला ligament प्रतीक्षा bone to bone connection हला ligament ठीक अछि पेरिओस्टियम होची बोन रो आउटर लेयर ता बोन रो आउटर कवरिंग ता ठीक आ ए जो सार्कोमियर ता कोन सार्कोमियर होची हमर यूनिट ऑफ द मसल्स ठीक आ टेंडन दा बोन टू मसल जॉइंट पड़थला हला आ सार्कोमियर ता को हम एमिति लिखुचे कि हाफ आई बैंड अछि प्लस गोटे ए बैंड अछि आ हाफ आई बैंड एति कि मिसी के हमर गोटे सार्कोमियर रो यूनिट फॉर्म होची हला वाई सार्कोमियर रो यूनिट फॉर्म होची आई बैंड जोटा कि हमर लाइट बैंड एटा को हमर आइसोट्रोपिक बैंड बोली मध्ये कहै छै आइसोट्रोपिक बैंड बोली मध्ये कहै छै आ ए बैंड हला कोन ये हला डार्क बैंड आ ये गेला हमर अनआइसोट्रोपिक बैंड
एनिसोट्रोपिक ठीक है ना डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी बा which part of the eye is primarily responsible for the color vision ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କୋ part of the eye responsible rods of the retina cones of the retina cornea ଆଉ sclera on responsible retina is the site of vision हैला retina होची हमरो primary site of vision ठीक अछि आउ कलर विजन ପାଇଁ बोली हमरो कोन्स रिस्पांसिबल हैला कलर विजन ପାଇଁ बोली हमरो कोन्स रिस्पांसिबल डॉट्स हमरो कोन ପାଇଁ रिस्पांसिबल ब्लैक एंड व्हाइट या फिर हमरो जो कोचंदी डिम लाइट विजन या फिर स्कोटॉपिक विजन स्कोटॉपिक विजन बोली जोटा को कहा जाउची से हे गेला हमर कोन डॉट्स ऑफ द रेटिना ठीक कोन्स ऑफ द रेटिना कोन ना जे हमर कलर विजन जेमेति कि रेड और ग्रीन कोन प्रेजेंट अछि से हमर कोन करूची ना हमर विजन हमर जो कलर विजन ता देखुची नेक्स्ट which part of the eye controls the amount of light entering by adjusting the size of the pupil को आईरो जो को पार्ट ता को केते अमाउंट रे लाइट आसुची केमिति जे आमे तार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करिके बा कंस्ट्रिक्शन करिके आबा डायलेशन करिके केमिति ताको आमे आखी को एडजस्ट करि परिबा लाइट अनुसार रेटिना आइरिस लेंस ऑप्टिक नर्व कहां बा क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 yes the iris okay ठीक अछि देखि दबा iris कब एटा करेक्ट आंसर एटा कोन ना this iris is a muscular diaphragm present in the eyes that contracts or expands to change the diameter of the pupil रो diameter को चेंज करिया पई बोली हमर जो स्ट्रक्चर ता दरकार थाए सेरा हेगला की से हेगला हमर आइस next question answer 45 which structure of the inner ear are primarily responsible for maintaining the balance cochlea semicircular canal eardrum tympanic membrane auditory ossicles कहां बा कहला बैलेंस मेंटेन करिया पई बोली हमर कानर को रीजन ता को पार्ट ता रिस्पांसिबल yes cochlea होची हमर हियरिंग पई बोली cochlea is responsible for hearing ठीक अछि semicircular canals जो तीन प्रकार कैनल अछि semicircular canals हैला आ वेस्टिब्यूल मिस्टिगिरी हमर हेड मूवमेंट को मेंटेन करूची आ सी हमर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करि परबो हैला एडा हमर कंट्रोल्स द हेड मूवमेंट and maintains the equilibrium of the body equilibrium maintain करिया रे ये हमरा हेल्प या ड्रम कोन करूची ये कलेक्ट करूची साउंड वेव्स collects the sound waves आउ ये गोटे हमरा माने मिड पार्ट between the outer ear and middle ear को गला बेले हमर जो बाटे जो ड्रम दा पड़िबो बा जो मेम्ब्रेन दा पड़िबो जोटा कि हमर साउंड वेव को कलेक्ट करिके से रिस्ट्रिक्ट करे सेडा हे गेला हमर की ईयर
ऑडिटरी ऑसिकल्स जोड़ा को कि हमर ईयर ऑसिकल्स बोली मने कहा जाउची छोटो छोटो ऑसिकल्स तीन प्रकार ईयर ऑसिकल्स अछि गोटे हला मेलियस आ गोटे हला इनकस आ गोटे हला स्टिप्स ए सब गुडा का हमर बॉडी रे सब स्मॉलेस्ट बोन किंतु आउट ऑफ ऑल द थ्री सब ए तीनटा जगह भीतर जदी देखिबा कि हमर ये हेगा सब स्मॉलेस्ट बोन आ ए बोन से अटैच है कि जो मसल टा लागी छी ताको कहा जाउची स्टेपिडियस मसल टा डिग्री अछि ठीक अछि तो एरा मध्ये हमर सब स्मॉलेस्ट हे जाउची मसल स्मॉलेस्ट मसल हे गला मध्ये हमर एटा है ना तो ए जो स्ट्रक्चर टा इनर ईयर रिप्रेजेंट अछि है ना कॉक्लिया एवडा को सेमी सर्कुलर कैनल्स हमर इनर ईयर रिप्रेजेंट होचंदी और ईयर ऑसिकल्स उडाबा ए ईयर ऑसिकल्स उडाबा एडा को सब हमर मिडिल ईयर रिप्रेजेंट ठीक अछि आ एडा हमर के कंट्रोल करूची बैलेंस और मेंटेनिंग के बैलेंस मेंटेन करूची हेड मूवमेंट कंट्रोल करके सेमी सर्कुलर कैनल्स मेंटेन करूची नेक्स्ट the normal number of chromosome in a human somatic body cell is 23 44 46 48 कौन होगा normal number of chromosome in the human somatic cell body cell रे कितने number of chromosomes अछि 23 pairs अछि से पचाची किंतु कोन नंबर रे पचाची ना तो 23 पेयर तारे कोन हे जिवो 23 into 2 which is 46 number of chromosomes 46 number of chromosomes ठीक अछि से भीतर हमर 44 टे हेता ऑटोसोम्स 44 हेला ऑटोसोम्स आउ जो वन पेयर रहिला आउ जो दीटा रहिले हैला से हेला हमर सेक्स क्रोमोसोम्स ठीक अछि तो हमर 44 प्लस XX जदि लिखली ताले एडा हमर फीमेल को डिनोट करबो काहेकि ना द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स बॉडी जोडा को कि बैक बॉडी को आ जाउची सेटा हमर फीमेल को डिनोट करूची और प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम ये हमर मेल को डिनोट करूची तो 44 प्लस XY हे गला हमर मेल तो ये क्वेश्चन आंसर हे जबा 46 क्वेश्चन आंसर हे गला 46 देन नेक्स्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी रो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होची सेल आ सेल सब मिसी गिरी कॉमन ओरिजिन रो टिश्यू हेले टिश्यू रो तापर कॉमन ओरिजिन रो हमर organ then organ system then finally we have organism then next the vertebral column is normally divided into how many main regions vertebral column is normally divided into how many main regions 3 4 5 6 3 4 5 6 कौन होगा आंसर yes it is divided into 5 main regions है ना 5 main regions अच्छा कौन region रे cervical neck region रे ये हला हमर 7 vertebrate 17 vertebrate ठीक अछि तापरे नेक्स्ट thoracic जोड़ा कि मिड बैक रीजन रे आसुची मिड बैक रीजन रे आसुची ये हला 12 vertebrate ना नेक्स्ट लंबर पोजीशन रे जोड़ा आसुची बा लंबर रीजन रे जोड़ा आसुची सेटा हला हमर लोअर बैक इट इज 5 vertebrate sacral बा pelvis रीजन रे जोड़ा आसुची सेटा हला 5 fused vertebrate ठीक तापरे हला coccygeal जोड़ा कि हमर हला टेल बोन 4 fused vertebrate तो टोटल 1 2 3 4 5 5 region रे डिवाइड 5 region रे divided yes Pratisha very good next powerhouse of the cell responsible for producing energy ATP very common कौन mitochondria next the normal resting adult blood pressure is generally considered to be around 120/80 जोटा कि हमर systolic pressure by diastolic pressure
को मेजर करूचे mmHg माने मर्क्यूरिक मिलीमीटर हम इसको मेजर करूचे मर्क्यूरिक मिलीमीटर रे मेजर करूचे हैला सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस तम मानको पे छोट होमवर्क करते कमेंट सेक्शन रे मते लिखि कहबो कमेंट सेक्शन रे मते लिखि कहबो कि इंस्ट्रूमेंट ता कोन को इंस्ट्रूमेंट ता जोटा कि हमर ब्लड प्रेशर को मेजर करूचे आंसर कमेंट सेक्शन रे रखिबो हैला आई विल बी चेकिंग ईच वन ऑफ देम थैंक यू सो मच एवरीवन आई होप आज सेशन तुमको भलो लागिला आउ गोटे मते सेशन आसीबा को जाउची आज ही हैला जोटा रे कि हमें आज एटा को हमें आउ गोटे सेशन भी लगेबा हैला कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऊपर तो सेति पई बोले समस्त जॉइन करबा को भूलिबनी आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप आ मु ए फाइल दा मते तमरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देबी जोटा कि तुम फ्यूचर रेफरेंस पई बोले थैंक यू सो मच एवरीवन जय जगन्नाथ।